Hello students, I am Nabila Tariq. Today we'll start from page number 69 of the chapter My Childhood from your reader. In this chapter till now we had studied a lot about the life of Abdul Kalam, especially his childhood. Now we'll study about his best friends and about his society. Okay, we'll start reading from the fourth paragraph. Every child is born with some inherited characteristics into a specific socio-economic and emotional environment and trained in certain ways by figures of authority. I inherited honesty and self discipline from my father. From my mother, I inherited faith in goodness and deep kindness, and so did my brothers and sister. I had three close friends in my childhood, that is Ramanand Shastri, Arvindam, and Siva Prakasan. Okay, this paragraph is also important, students. So you are either you'll underline it or mark it with brackets. Here, Abdul Kalam is saying that every child, when is born, takes some qualities from either his family, his parents, or his society, people around, from the socio-economic and emotional environment. Socio-economic, the society in which we live, our economical conditions. At the same time, the emotions that we are surrounded by, a family, the love and care of the family, the neighbors, the relatives. All these are, these are all the dependent factors then that we all inherit since birth. Similarly, he says that I have inherited honesty and self discipline from my father. That means, from his father, he had gained the quality of honesty and self discipline, and from his mother, he has gained the quality of faith in goodness and deep kindness. And the same qualities were inherited by his other brothers and sisters, three brothers and sister. Now he has mentioned the names of three friends, that is Ramanand Shastri, Arvindam, and Shiva Prakashan, who was his best friends, and all these are Hindus, and he is a Muslim. So now we will study about the equality that was between them. All these boys were from Orthodox Hindu Brahmin families. As children, none of us ever felt any different amongst us because of our religious differences and upbringing. In fact, Ramanand Shastri was the son of Pakshi Lakshman Shastri, the high priest of Rameshwaram temple. Later, he took over the priesthood of the Rameshwaram temple from his father. Now, he's saying that all these three friends were Brahmin Hindus, and they never felt any difference when they between them as they were brought up, and means not a single time he felt that there was some religious difference between them, and there was some kind of difference in their upbringing. मतलब वो लोग जिस तरह से पले बड़े थे, जो उनको सिखाया गया था उनकी फैमिलीज़ में, हम जब भी बच्चे होते हैं घर में तो हम उन्हें कुछ अच्छा सिखाते हैं. So the teachings were similar, the upbringing was similar, so they never felt any difference. Now he's talking about Ramanand Shastri. He's saying he was the son of Lakshman Shastri, who was the high priest at Ramanand temple. मतलब रामेश्वरम में जो एक बड़ा सा टेम्पल था जिसका नाम था रामानंद टेम्पल, उसके सबसे बड़े पुजारी थे रामानंद शास्त्री. So he was Pakshi Lakshman Shastri, and Ramanand Shastri was the son of Pakshi Lakshman Shastri. So you can imagine that his father was a pujari, yet they never felt that his son's best friend should not be a Muslim. Then later on, Abdul Kalam says that Ramanand Shastri only took over the priesthood of that temple. Now he's giving us information about Arvindam. Arvindam went into the business of arranging transport for visiting pilgrims, and Siva Prakasan became a catering contractor for the Southern Railways. Now he's telling about the occupation and profession which his three friends took after they grew big.
So Ramanan Shastri took over the priesthood of the temple. Arvinder Shastri started his business of arranging transport for the pilgrims, the visiting pilgrims. Pilgrims are people who visit religious places for the motive of worship. So this Rameshwaram was a place which was famous for temples. So people used to come over here to worship, and those people who come for worship purpose are called pilgrims. So Arvindam started a business of arranging transport for them, and Siva Prakash Singh he became a contractor in the railways. Now fifth paragraph. This is also important, students. This fifth paragraph, it tells us that how secular Abdul Kalam's family was. Means Abdul Kalam's family, being a Muslim, they were of a very broad mind. They never had any such religious discrimination in their minds and in their heart. This is explained by this fifth paragraph. During the annual Sri Sita Ram Kalyanam ceremony, a family used to arrange boats with a special platform for carrying idols of the Lord from the temple to the marriage site situated in the middle of the pond called Ram Tirth, which was near a house. Now he's saying that every year in their place there used to be Sita Ram Kalyanam ceremony. Now Kalyanam को साउथ इंडियन लैंग्वेज में शादी को कल्याणम बोलते हैं. कल्याणम मीन्स मैरिज. So they used to actually celebrate Lord Sita and Lord Ram's marriage, and that too they used to celebrate the ceremony in the middle of the pond. तो एक तालाब था बहुत बड़ा जिसके बीचों बीच एक मंदिर था जहाँ पे ये लोग ये सेरेमनी परफॉर्म करते थे. तो आइडल्स मीन स्टैचूज़, लॉर्ड राम और लॉर्ड सीता के स्टैचूज़ को बोट्स मतलब नाव पे कैरी करके उस पॉन्ड के बीचों बीच उस मंदिर तक लाया जाता था. एंड अब्दुल कलाम्स फैमिली यूज्ड टू अरेंज बोट्स. हिज वर्क वॉज टू ब्रिंग द idols of Lord Ram and Lord Sita to the place where their ceremony was to be performed. So they never ever hesitated in doing a work which was supposed to be a strict religious Hindu, kind of an activity. They never thought like that they should not arrange boats because it's carrying Lord Sita and Lord Ram's idols and they are the Hindu gods. So they never had such kind of discrimination in their minds and in their hearts. They were broad-minded. Then, events from Ramayana and from the life of the Prophet were the bedtime stories my mother and grandmother would tell the children in our family. Now he is saying that during the night time there are bedtime stories which our mothers and grandmothers always narrate us, and those are the stories which are mostly related to our religious books. So they not only related the stories of Quran or for from the life of Prophet who is supposed to be worshipped by Muslims. At the same time they also used to recite the stories from Ramayana. मतलब वो सिर्फ अपने ही कुरान या प्रॉफिट की लाइफ की स्टोरीज़ नहीं सुनाते थे, वो रामायण से भी स्टोरीज़ बच्चों को बेड टाइम स्टोरीज़ के तौर पे सुनाया करते थे. सो इससे क्या पता पड़ता है कि अब्दुल कलाम की फैमिली सेक्युलर थी, एट द सेम टाइम उनकी सोच बहुत ब्रॉड थी एंड दे नेवर हैड डिस्क्रिमिनेशन अगेंस्ट एनी रिलीजन. Now come to paragraph 6. One day when I was in 5th standard at Rameshwaram Elementary School, a new teacher came to our class. I used to wear a cap which marked me as a Muslim and always sat in the front row next to Ramanand Shastri, who wore the sacred thread. The new teacher could not stomach a Hindu priest's son sitting with a Muslim boy. Now he is narrating us an incident when he was in the 5th standard in the elementary school of Rameshwaram. He is saying that he used to wear a cap. Abdul Kalam is saying that I used to wear a cap which made me identified as a Muslim. मतलब टोपी पहनते थे वो, जिससे वो किसी को भी समझ में आ सकता था कि वो एक मुस्लिम है. और वो हमेशा सबसे आगे बैठते थे रामानंद शास्त्री के साथ, who wore a sacred thread. Sacred thread मतलब जनेऊ जिसे कहते हैं, वो अपने गले में पहनते थे जिससे समझ में आता था कि वो एक ब्राह्मण है. Now this new teacher
who came in the class, he could not stomach means could not tolerate, उनसे ये पचा नहीं एक तरह से कि एक हिंदू प्रीस्ट, हाई प्रीस्ट का लड़का एक मुस्लिम लड़के के साथ बैठे, ये चीज़ उनको टॉलरेट नहीं कर पाए जो नए टीचर थे. In accordance with our social ranking, as the new teacher saw it, I was asked to go and sit on the back bench. I felt very sad, and so did Ramanand Shastri. He looked utterly downcast as I shifted to my seat in the last row. The image of him weeping when I shifted to the last row left a lasting impression on me. Now, he is saying according to the social ranking, means according to the society's religious social ranking. Of course, it is a Hindu dominant society, so they overlook the Muslim people. It is about that time. So उसके रैंकिंग के अकॉर्डिंग उन्होंने मुस्लिम बॉय को, क्योंकि अब्दुल कलाम मुस्लिम थे, तो इन्हें सबसे पीछे वाली सीट पे जाने को बैठने को बोला. इससे अब्दुल कलाम को बहुत बुरा लगा. ही फेल्ट वेरी सैड, बट एट द सेम टाइम रामानंद शास्त्री स्टार्टेड क्राइंग. रामानंद शास्त्री जो उनके दोस्त थे वो रोने लगे, बिकॉज उन्हें ही फेल्ट वेरी डाउनकास्ट मतलब उन्हें बहुत सैड और डिप्रेस्ड फील हुआ कि उन्होंने उसके बेस्ट फ्रेंड अब्दुल कलाम को सबसे पीछे जाके सीट पे बिठा दिया टीचर ने. और अब्दुल कलाम ने जब रामानंद शास्त्री को रोता हुआ देखा तो एक हमेशा का एक इम्प्रेशन पड़ा अब्दुल कलाम की लाइफ में. वो कभी भी उस सीन को नहीं भूल पाए दैट रामानंद शास्त्री बीइंग अ ब्राह्मण क्राइड फॉर अब्दुल कलाम. दैट मीन्स रामानंद शास्त्री के लिए रिलीजन या कास्ट जो है वो फ्रेंडशिप से बड़ी नहीं थी, उनके लिए सबसे बड़ी थी दोस्ती. दैट्स वाई ही क्राइड फॉर अब्दुल कलाम एज ही वॉज मेड टू सिट इन द लास्ट सीट. Come to the 7th paragraph. After school, we went home and told our respective parents about the incident. Lakshman Shastri summoned the teacher in our presence, told the teacher that he should not spread the poison of social inequality and communal intolerance in the minds of innocent children. He bluntly asked the teacher to either apologize or quit the school and the island. Now, जब वो लोग घर वापस गए तो उन्होंने अपने अपने पेरेंट्स को बताया. रामानंद शास्त्री ने अपने फादर को बताया, लक्ष्मण शास्त्री को, जो कि प्रीस्ट थे उस रामेश्वरम टेम्पल के. सो लक्ष्मण शास्त्री, क्योंकि ही वॉज एज इट इज़ मैंशनड अर्लियर दैट ही वॉज द हाई प्रीस्ट, सबसे बड़े पुजारी होने की वजह से उनकी बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट भी थी सोसाइटी में और उस टाउन में, और एट द सेम टाइम लोग उनकी बात भी मानते थे. ही समन्ड द टीचर. In the third line of the 7th paragraph, there is this word summoned, SUMMONED. समन मतलब पूछताछ करना. उन्होंने टीचर को बुलाया, उनसे बात करी और उनसे ये बोला कि उनको इनइक्वालिटी का पॉइजन सोसाइटी में नहीं फैलाना है. इनइक्वालिटी, सोशल इनइक्वालिटी एंड कम्युनल इंटॉलरेंस, मतलब सोसाइटी में रिलीजियस पॉइंट ऑफ व्यू से किसी भी तरह की इनइक्वालिटी का जो पॉइजन है वो उन्हें नहीं फैलाना है. और स्पेशली छोटे बच्चों के माइंड में, इनोसेंट चिल्ड्रन, दे आर नॉट अवेयर ऑफ कास्टिज्म और रिलीजियज्म. सो उनके माइंड में किसी भी तरह की भेदभाव पैदा करना, एक जहर पैदा करना, दैट वाज यू मे से अ सिन. सो उन्होंने टीचर से फेस टू फेस ब्लंटली कहा कि या तो वो अपोलोजाइज़ करें, मतलब माफ़ी मांगे, या वो आइलैंड को क्विट करके, क्विट मीन्स छोड़ के हमेशा के लिए चले जाएं. Not only did the teacher regret his behavior, but the strong sense of conviction Lakshman Shastri conveyed ultimately reformed this young teacher. Now, the teacher regret का मतलब पछताना. टीचर पछताया भी. At the same time, a strong sense of conviction मतलब एक जो यकीन, एक ओपिनियन, एक बिलीफ जो लक्ष्मण शास्त्री ने अपनी इस बात से दिखाया कि हर धर्म बराबर है, उससे उस यंग टीचर के अंदर एक रिफॉर्म आया, एक बदलाव आया. उस टीचर को ऐसा लगा दैट इफ़ अ हाई प्रीस्ट ऑफ द टेम्पल, अगर एक पुजारी होने के बाद भी वो हर धर्म को एक मान रहे हैं और हर धर्म की इज्जत करना सिखा रहे हैं, तो उनको भी वही चीज़ करनी चाहिए. और टीचर changed his behavior. Now, come to the 8th paragraph. On the whole, the small society of Rameshwaram was very rigid in terms of segregation of different social groups.
However, my science teacher Siva Subramania Iyer, though an orthodox Brahmin with a very conservative wife, was something of a rebel. He did his best to break the social barriers so that people from varying backgrounds could mingle easily. Now, अब्दुल कलाम अपने रामेश्वरम जो टाउन था उसकी सोसाइटी के बारे में बात करते हुए बताते हैं दैट द सोसाइटी वॉज वेरी रिजिड. रिजिड मतलब बहुत टफ थी, बहुत रफ सोसाइटी थी जो कि अपने उसूलों को लेके बहुत ज़्यादा सख्त थी. वहाँ पे सेग्रीगेशन का मीनिंग होता है डिवीजन. ओके, राइट इट डाउन विद अ पेंसिल ओवर द स्टूडेंट. सेग्रीगेशन मीन्स डिवीजन. वहाँ पे छोटे छोटे सोशल ग्रुप्स के अकॉर्डिंग पूरी सोसाइटी डिवाइडेड थी. अब सोशल ग्रुप्स कैन बी इन टर्म्स ऑफ इकोनॉमिकल फैक्टर्स, कैन बी इन टर्म्स ऑफ कास्टिज्म एंड कैन बी ऑन द बेसिस ऑफ रिलीजन, किसी भी चीज़ में. लेकिन सोशल ग्रुप्स में डिवाइडेड थी, बहुत रिजिड थी, बहुत छोटी सोच थी वहाँ लोगों की, बहुत कंजर्वेटिव माइंड था. बट उनके एक टीचर थे, साइंस टीचर, हुज नेम वॉज शिवा सुब्रमण्य अय्यर. ही वॉज ऑल्सो अ ब्राह्मण मैन एंड फ्रॉम अ वेरी ऑर्थोडॉक्स मीन्स फ्रॉम अ वेरी ट्रेडिशनली कल्चर्ड फैमिली. और उनकी वाइफ बहुत ज़्यादा कंजर्वेटिव मतलब पुराने सोच की थी. लेकिन और बहुत एंड शी वॉज समथिंग ऑफ अ रिबल. REBEL, रिबल मीन्स शी वॉज वेरी फ्यूरियस. मतलब कभी भी अगर रिलीजन की बात होती थी, हिंदू मुस्लिम की बात होती थी, तो वो बहुत ज़्यादा रिजिड थी. मतलब उनके लिए ये चीज़ें बहुत मायने रखती थी. वो उन्हें अपने ही रिलीजन को सबसे ज़्यादा प्योर मानती थी. वो किसी मुस्लिम से या किसी लोअर कास्ट के इंसान से बात करना, मिलना जुलना उन्हें बिल्कुल पसंद नहीं था. So she was a very conservative lady and she used to get very furious, very angry if she was made to talk with someone of the other religion or of a lower caste. So शिवा सुब्रमण्य अय्यर एक बहुत खुले विचार के इंसान थे, लेकिन उनकी वाइफ उनसे ही ऑपोजिट थी. He used to spend hours with me and would say, Kalam, I want you to develop so that you are on par with the highly educated people of the big cities. नाउ अब्दुल कलाम से शिवा सुब्रमण्य अय्यर कहते थे कि कलाम, आई वॉन्ट यू टू डेवलप, मैं चाहता हूँ तुम आगे बढ़ो. एंड यू आर ऑन द पार. ऑन द पार मीन्स इक्वल टू, मतलब तुम बड़े शहरों के एजुकेटेड लोगों के बराबर, उनके इक्वल लगो. तुम इतना पढ़ लो कि जो बड़े बड़े शहरों में जो हाईली एजुकेटेड लोग हैं तुम उनके इक्वल, उनके बराबर लगो. So I want you to study, I want you to develop. Now being a Brahmin man, he wanted a Muslim boy to study and move ahead in life. So this was an example setting, an example which can be settled in an orthodox society. कि मीन्स एक टीचर जो कि एक ब्राह्मण है लेकिन वो ये चाहते हैं कि एक मुस्लिम बॉय पढ़ लिख के आगे बढ़े. सो दिस इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ सेक्युलरिज्म. कम टू द 9th paragraph. One day he invited me to his home for a meal. His wife was horrified at the idea of a Muslim boy being invited to dine in her ritually pure kitchen. She refused to serve me in her kitchen. Siva Subramania Iyer was not perturbed. He did not get angry with his wife but instead served me with his own hands and sat down beside me to eat his meal. Now as it is told earlier कि Siva Subramania Iyer की जो wife थी वो बहुत ज़्यादा conservative थी. एक दिन शिवा सुब्रमण्य अय्यर ने अब्दुल कलाम को अपने घर डिनर पे बुलाया. हिज वाइफ डिड नॉट लाइक द आइडिया कि एक मुस्लिम लड़का उनके प्योर किचन में, मतलब उनके पवित्र किचन में बैठ के खाना खाए और उनके जो किचन है उसे इम्प्योर कर दे. मतलब शिवा सुब्रमण्य अय्यर की वाइफ का ये मानना था दैट इफ़ अ मुस्लिम बॉय विल सिट एंड ईट इन हर किचन विल बिकम इम्प्योर. So but Siva Subram Iyer was a very strong man indeed and he was not disturbed by this behavior of his wife. At the same time उन्होंने अपने हाथों से शिवा सुब्रमण्य वो अब्दुल कलाम को खिलाया. मतलब शिवा सुब्रमण्य अय्यर ने अपने हाथों से अब्दुल कलाम को अपने ही किचन में बिठा के खिलाया. His wife watched us from behind the kitchen door. I wonder whether she had observed any difference in the way I ate rice, drank water or cleaned the floor after the meal. When I was leaving his house, Siva Subramania Iyer invited me to join him for dinner again the next weekend. Now, शिवा सुब्रमण्य अय्यर की जो वाइफ थी वो बहुत दूर से ऑब्जर्व कर रही थी, देखे जा रही थी और वो गुस्से में थी बिकॉज अ मुस्लिम बॉय वॉज सिटिंग इन हर किचन. But Abdul Kalam knew that she is watching him from
a distance. So he was very careful in eating and drinking. मतलब वो बहुत carefully उन्होंने चावल खाए, उन्होंने पानी पिया, उन्होंने ज़मीन साफ़ करी. And he was wondering कि क्या मेरा खाना या मेरा पीना या मेरी ज़मीन साफ़ करने का तरीका अलग है और जो हिंदूज़ और ब्राह्मण होते हैं उनका तरीका अलग होता है. सो ही वॉज बीइंग वेरी कॉन्शियस. मीन्स अब्दुल कलाम ने बहुत कॉन्शियसली, बहुत केयरफुली खाना खाया, पानी पिया. Then when they were leaving, again Siva Subramania Iyer invited Abdul Kalam for in the next week. मतलब अगले हफ्ते फिर उन्होंने invite किया उनको खाने पे. Observing my hesitation, he told me not to get upset, saying, "Now, student, these inverted comma open, start underlining. Okay, this paragraph number 9th on page number 73. You have to start underlining. Once you decide to change the system, such problems have to be confronted." Underline these two lines in the inverted comma. Once you decide the system, मतलब अब्दुल कलाम थोड़ा हेजिटेट कर रहे थे. हेजिटेट करने का मतलब होता है हिचकिचाना. वो आना नहीं चाह रहे थे सिवा सुब्रमण्य अय्यर के घर फिर से खाना खाने, बिकॉज उन्हें रियलाइज़ हो रहा था कि उनकी वाइफ को पसंद नहीं आया. बट देन सिवा सुब्रमण्य अय्यर ने एक बहुत अच्छी टीचिंग दी अब्दुल कलाम को, और उन्होंने बोला that once you decide to change the system, such problems have to be confronted. That means अगर आप किसी rigid, किसी पुराने system को बदलना चाहते हो, आप अगर कोई reform लेके आना चाहते हो, तो आपको जितने भी problems हैं उनको confront मतलब face करना पड़ेगा. आप डर के, हिचक के पीछे हटोगे तो आप कभी भी कोई changes नहीं ला सकते. If you want to bring reform in the society, in the system, for the good of everyone, that you will have to face each and every evil or bad circumstances. You should not get frightened, you should not get scared, you should not hesitate. You should face each and every situation, then only you will be able to bring reforms. ये चीज़ अब्दुल कलाम को समझ में आई और अब्दुल कलाम ने उनका अगले हफ्ते का डिनर का इनविटेशन एक्सेप्ट कर लिया. When I visited his house the next week, Siva Subramania Iyer's wife took me inside her kitchen and served me food with her own hands. Now, जब अगले हफ्ते वो आए तो सिवा सुब्रमण्य अय्यर की वाइफ ने खुद अब्दुल कलाम को अपने किचन में बिठाया और अपने हाथ से खाना सर्व किया. Why was a change in his wife? उनकी वाइफ में इतना चेंज क्यों आया? क्योंकि उन्होंने ये रियलाइज़ किया that Abdul Kalam, although was a Muslim, but had no difference in the way of eating, talking, drinking, cleaning the floor. So everyone is made by God. We are all God's children. Whether we are Hindu, whether we are Muslim, or whether we are of any caste or economic or social status, after all we are all human beings, and it doesn't matter. No one impures our kitchen, or impures our life, and no one makes it pure. We are all human, we are all equal. This was understood by his wife, and so she brought a reform in herself. Now come to paragraph number 10. Then the Second World War was over and India's freedom was imminent. Indians will build their own India, declared Gandhiji. The whole country was filled with an unprecedented optimism. I asked my father for permission to leave Rameshwaram and study at the district headquarters in Ramananthapuram. Now, सेकेंड वर्ल्ड वॉर ख़त्म हो गया था और इंडिया की फ्रीडम एमिनेंट मीन्स क्लियर थी. इट वॉज श्योर, इट वॉज कॉन्फिडेंट, इट वॉज विजिबली क्लियर कि इंडिया विल गेट इट्स फ्रीडम. गांधी जी ने डिक्लेयर कर दिया था कि हम अपने खुद की इंडिया बनाएंगे. द होल कंट्री वॉज फिल्ड विद अ वेरी श्योर ऑप्टिमिज्म. ऑप्टिमिज्म मीन्स पॉजिटिवनेस. पूरी कंट्री एक पॉजिटिविटी से भर गई थी. Everyone was feeling very good and very positive within their minds and hearts that they will be free. Then at that time, Abdul Kalam asked his father to leave Rameshwaram and go to the district headquarters of Ramananthapuram to study over there. Now come to paragraph 11. He told me as if thinking aloud, "Abul, I know you have to go away to grow. Does the seagull not fly across the sun alone without a nest?" Now,
Abdul Kalam, when asked him the permission to leave his house and go to a bigger place to study over there, तो वो उनको ये बताते हैं दैट अब्दुल कलाम के फादर उनसे अब्दुल कलाम से कहते हैं कि यू हैव टू गो इन ऑर्डर टू ग्रो, मतलब अगर आपको बढ़ना है आगे तो आपको मूव करना पड़ेगा। जैसे कि एक सीगल दूर उड़ने के लिए अपना नेस्ट, अपना घोंसला छोड़ के जाती है, सिमिलरली फॉर एनी चाइल्ड इफ़ ही और शी हैज़ दिस डिज़ायर टू ग्रो एंड डेवलप, दे हैव टू मूव अवे फ्रॉम द हाउस, फ्रॉम द पेरेंट्स, देन ओनली दे विल बी एबल टू लर्न न्यू थिंग्स। He quoted Khalil Gibran to my hesitant mother. Hesitant मतलब हिचकिचाना। उनकी मदर हिचकिचा रही थी कि उनका बेटा उन्हें छोड़ के दूर जा रहा है, तो उन्होंने खलील गिब्रन, नाउ खलील गिब्रन इज़ अ फेमस ऑथर, उन ऑथर के कोट्स को बोल के समझाते हुए उन्होंने बोला उनकी मदर से that your children are not your children, they are the sons and daughters of life longing to itself. That means the children whom you give birth to, you don't have the full right on them. You can teach them, you can put in good manners and qualities in them, but you cannot stop them from their own behavior, from their own development. Ultimately, in order to grow and in order to develop, they'll have to move away far from you. They come through you but not from you. They come through you. Mothers give birth to their children, parents give birth to their children, but not necessary that they can restrict them with themselves lifelong. उनको अपनी लाइफ की ज़रूरतें पूरे करने के लिए लाइफ की बहुत सारी रिक्वायरमेंट्स होती हैं, जिसे बोलते हैं लाइफ लॉन्गिंग, उनको पूरी कंप्लीट करने के लिए उनको अपनी जगह से दूसरी जगह जाना पड़ेगा। You may give them your love, but you're not your thoughts. Every parent can love their children, teach them good values, but you cannot give them your own thoughts, क्योंकि हर इंसान की सोच अलग होती है। हम अपने बच्चों को प्यार दे सकते हैं, लेकिन अपनी सोच उन पे इम्पोज नहीं कर सकते, for they have their own thoughts. So, here, this is an extract from The Wings of Fire, that was the autobiography of Abdul Kalam. And in this chapter, we had learned a lot about Abdul Kalam's childhood and his society. Thank you.